to be part of this. So before I start, I would really like to introduce one more important person in our country, and you will automatically know who is he, and I will start with a small video. So I hope everybody just please stay glued to the screens, and I will share the video. एक और कोई आपको लगेगा कि एक पैनल में है हमारे साथ आज वो हमारे साथ जीवित नहीं है, पर वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे लिए छोड़कर गए हैं कि इट इज रियली डिसहार्टनिंग टू सी दैट.
आज कर लीजिए, आपने म्यूट पर रखा है खुद को। छवि मैडम काइंडली अनम्यूट। छवि मैडम आप आपको अनम्यूट कर लीजिए। योर माइक्रोफोन इज ऑन म्यूट। Yeah, okay. You all saw the video, right? And it was super hard hitting. I mean, it is hard hitting for me. Why? Because I felt like crying. Whenever I see this video, I feel like crying. It ends with a message: we hope we had time to save our planet Earth. And we do have time. So what is required is intention. But how? So before I move forward, Aj Abdul Kalam ji, so Abdul Kalam ji had, this is the message from him. And he's been a remarkable person, we all know that. And this particular message is now recorded on YouTube. It's very much available on YouTube. पर मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि please go through this message again and again and again. This has to hit you here in your heart. This has to pierce your chest. Because that is one major thing we all lack. We all कहते हैं हम लोग को आलस आता है, हम लोग को रेजिस्टेंस आती है कुछ भी चीज हमको अच्छा करने में. We are so used to living with the way we are. Plastics, the pollution, the like everything we are doing that. Like, why do we want to do it? Why can't we change our lifestyles? Why can't we change the thinking process? So before I move forward, I'll share my screen again. And जैसा कि आपने देखा अभी, just a sec, stop share. जैसा कि आपने अभी देखा कि Abdul Kalam ji has spoken more about water here. Like kaise water resources, and he also spoke about food. He also spoke about, like how the water fights would begin. Eventually people started guarding their own water. आज हमें कहते हैं 8 ग्लास पानी पियो, आज से 20 साल बाद 50 साल बाद शायद हमारे पास में 1 ग्लास पानी भी नहीं बचेगा पीने के लिए. Anyways, water capsules is just around the corner. People have come up with water capsules, right? And oxygen cylinders. We all know कि थोड़े टाइम बाद हमको जिस तरीके से हमने pollution फैला रखा है, like all our, हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है. शरीर ही नहीं, हमारा पूरा ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स, consciousness is made out of these 5 elements, which is nothing which you can see on your screen: earth, water, fire, air and space. हमने इन 5 तत्वों को pollute कर रखा है. Earth we all know, water of course, earth में अगर पानी अगर अर्थ से ही नीचे जाता है, वाटर रिसोर्सेज को हमने पोल्यूट कर रखा है. हमने अग्नि तत्व को पोल्यूट कर रखा है. हमने आकाश तत्व को पोल्यूट कर रखा है. हमने प्रदूषण हमारे हर कॉर्नर में है. एंड आई एम श्योर you as a panelist here, we all will agree to that. और इससे क्या नुकसान होते हैं? Degenerative diseases. इससे हमारे हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडीज पे बहुत ज्यादा आता है. आपके गैस्ट्रो डिजीजेस, आपके हेडेक्स, आपके रेस्टलेसनेस, मतलब यू विल नॉट गेट गुड स्लीप, यू विल get cancerous diseases. There are multiple diseases which is only there because of this pollution. There's so many diseases which can be avoided, but which is there only because we have polluted our environments. और ये हम सबको पता है कि we have four sources. At least human body is dependent on for energy on the 4 sources, which is what? Food, which is what? Air, which is what? अच्छी नींद. एक रात को अच्छी नींद आए, that energizes us, and a very stress free mind, right? तो अगर हमारे पास एक अच्छी नींद आ जाए, अच्छी कहते हैं ना, शांत दिमाग बहुत चीजों को सुधार देता है, हमारा स्ट्रेस को, बीमारियों को दूर करता है. आजकल तो एनीवेज हम ये बोलते हैं कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस. खाना अच्छा नहीं है हम जो खाते हैं,
Okay, for example, if I say, can you guys live without food? सोचो आप, can you really live without food? You know, हम जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, if I'm ask you to stay inside doors, आप कमरे में बंद होकर बैठ जाओ और मैं आपको खाना नहीं दूंगी और कपड़े नहीं दूंगी, या आप चूज करो between food and clothes, believe me, what will you choose? Of course food, because food, पेट भरना है, शरीर बाद में ढक लेंगे, पेट पहले भरना है. बट हमने उसी फूड को अपने खराब कर रखा है. वही फूड जो हमारे पास आता है उगकर आज, वो उसको केमिकलों से भर रखा है, और इतना ज्यादा हम उसके लिए अपना केमिकल वाला फूड खा रहे हैं, एंड वी आर पेइंग इवेंचुअली मेडिकल बिल्स आउटसाइड. डू वी रियली वांट दैट? एंड डू यू गाइस, आई मीन, नो दैट प्लांट्स, हमारा सॉइल जो है, जहां पर हमारे पौधे उगते हैं, यू नो, उसके अंदर इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो उन प्लांट्स के थ्रू ही हमें अवेलेबल होता है. हम मिट्टी नहीं खा सकते हैं. हम क्या खा सकते हैं? पौधा जो सब्जी हमें दे रहा है, हम वो खा सकते हैं. और वो पौधे क्या करते हैं? वो सॉइल के अंदर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खींच के, कितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खींच के वो हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, और ये कहीं और अवेलेबल नहीं है. You take any kind of farming, gardening, ये कहीं पे, जब तक आप मिट्टी तत्व पर, अर्थ एलिमेंट पे अपना खाना नहीं उगाओगे, जब तक वो सॉइल हमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं देगी, ये हम हेल्दी नहीं रह सकते. बहुत सारा डिपेंडेंसी हमने अब अदर वेज ऑफ फार्मिंग पे भी हम लेते जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, जैसे ओके, सो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, पर आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स टू, बट लेट मी जस्ट एंड दिस हियर कि ये जो मैं आपको बात करी, तो ये कैसे हम लोग बैलेंस ला सकते हैं? दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू get an answer to. And how? I will tell you. The only way we can balance is doing home gardening or natural farming. हम सिर्फ ऐसे ही बैलेंस ला सकते हैं. Believe me, vermi composting, why not? Because it majorly uses बाजार के imported earthworm. They are not desi worms. Hydroponics, of course, it is organic, chemical free, but it uses extracts. हम natural farming में बात करते हैं, naturally grown vegetables and fruit की बात करते हैं कि we are allowing our nature to work for us. वो हम बायोरिदम से हम जितना बाहर जाते जा रहे, एक बायोरिदम होता है ना, सन जैसे सूरज है, वो अपने टाइम पर उगता है और अपने टाइम पे ढलता है. क्या उसके सूरज के उगने और ढलने पर किसी ने कोई रोक लगा पाया है? नहीं. आज हमने अपने शरीर को, हमने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिया है कि हम रात के 12 से 4 बजे पार्टी करते हैं, 10 से 4 बजे, और बाकी दिन सोते हैं. And ideally what it should be like 4 a.m. you should get up, and by 6:38 you should sleep, as per the biorhythm of the world, of the nature. हम जितना इस बायोरिदम से हम बाहर जाएंगे, उतना ही हम अपना शरीर को और अपने प्लैनेट को नुकसान पहुंचाते जाएंगे. So that is why I don't recommend hydroponics. That is why I will say no to vermicomposting. And everything is there in abundance in our nature. You know, sometimes I laugh at it कि अगर जिस दिन हमने हाइड्रोपोनिकली ग्रो करना शुरू कर दिया, तो उस दिन सरकार जो है, जो भी हमारे जो जमीन के ऊपर लड़ाई चल रही है, वो ना, हमारे पास 1 इंच भी जगह नहीं बचेगी फॉर आवर लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉर आवर फार्म लैंड्स, नॉट इवन अ सिंगल इंच ऑफ स्पेस. हम बस हर जगह स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स देखेंगे.
there'll be no trees left, there'll be no areas, parks, gardens, सब खत्म हो जाएगा अगर हमने ये छूट दी कि नहीं आप हाइड्रोपोनिकली उगाओ, क्योंकि वो तो एक पानी में उग जाएगा. So important is to understand how to maintain that balance in the whole ecosystem. एक और आपको हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट देती हूँ कि हम बाजार से कोई भी सब्जी खरीद के लेकर आते हैं. Most of our subjis, our vegetables and fruit loses its nutrients. मतलब 30% न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है 3 दिन के बाद. जो आपके घर की हरी साग सब्जियां हैं वो लिटरली वो ऑलमोस्ट 95% उसकी विद इन 24 आवर्स वो फार्म से यहां आते आते घर तक आते आते लूज हो जाता है. इनफैक्ट नेचुरल फार्मिंग में वी ग्रो स्पिनच and हरी साग सब्जियां to extract all the chemicals out of the land. Like all the chemicals, it is used for that. So it is used to convert chemical farms to natural farms. And that is why it's, I mean, I would say at least start growing your own green vegetables at home. Also, another very important reason is we have to shorten this food chain. एक घर के होम गार्डन से मैं पालक काट के तुरंत आके बना रही हूँ, उसका टेस्ट will be very very different from what you get in supermarkets. Of course हम सब कुछ खुद नहीं उगा सकते हैं. We need to get, you know, जैसे कहते हैं हम, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना हमारे घरों में, ऐसे एक फैमिली फार्मर होना चाहिए जो आप जो कहो वो आपके लिए उगा के दे, उसको भी खुशी होगी. ये हमें शॉर्टन, अपनी जितनी फूड चेन हम शॉर्ट करते जाएंगे, हमारा क्या क्या बचेगा. हम फूड चेन जितना हमारा लंबा होता है, कैसे, एक तो पैकेजिंग कॉस्ट, प्लास्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, फिर जब आम कच्चा होता है वो हम फल पेड़ से तोड़ते हैं और उसको हम फिर उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं. एक होता है पेड़ का पका हुआ आम. ऑफ कोर्स सारे न्यूट्रिएंट्स तो हम खत्म कर ही दे रहे हैं. वी आर लाइक किलिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और फूड हम प्रोसेस्ड खाए जा रहे हैं जितना हम प्रोसेस खा सकते हैं, क्योंकि वो फार्म से किसी फैक्ट्री में जाएगा, वहां पे फूड प्रोसेस होएगा, फिर वो आपको मिलेगा. एंड दैट इज वाई home gardening is very very important in today's times. And that is why farming, get into anything, that should be the new business. Get into farming, get into doing home gardening. आपने देखा कि हमारा कितना फूड का न्यूट्रिएंट लूज होता है. इनफैक्ट इन दिस होल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड growing, हम almost 1/3 of our food we are wasting. पर हम सब जो यहाँ बैठ के वेबिनार्स कर रहे हैं ना, we are literally so busy. हम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर दुनिया पेड़ पे क्या कंप्यूटर ही हमें डाउनलोड करके खाना दे देगा. Is that true? Edibles are not downloadable. You have to grow food to eat it. Even if you're eating processed food ना, वो पोटैटो चिप्स का पैकेट के लिए भी उसको असली आलू चाहिए काटने के लिए और तलने के लिए. So it is very very important. Start to grow your own vegetables today. Of course chemicals is just one of the reasons. और कि केमिकल्स इतने सारे हैं, हमको उस केमिकल्स को अवॉइड करना है, हमको नहीं खाना है केमिकल्स वाला खाना. But obviously we all want it. That is our aim. And what else? It brings so much of biodiversity in our house. मेरे घर के छोटे से अमरूद के पेड़ पे एक मक्खी पंछियों का नेस्ट है, छोटा सा. I remember during this COVID time, I have a little small patch outside my house.
वहां पे मेरे पास बहुत सारा पालक का बीज बचा हुआ था एंड मेरे माली ने वहां पे ऐसी पालक फेंक दिया, कहता नहीं नहीं भाभी क्या करे, वेस्ट जाएगा तो डाल देते हैं. I for the whole 2.5 months I was enjoying that palak, and where we all know कि उस समय हमें सब्जी बाजार से निकल के लाना was such a difficult task. पर पता है हमारे अंदर रेजिस्टेंस आती है कि हम कैसे उगाएं, कहाँ से जगह ढूंढो जगह, टेरेसेस पे, टेबल टॉप्स पे, आपके बालकनीज में. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन ग्रो इन वेरियस स्पेसेस. किसी के पास घर नहीं है, छोटा है, बड़ा है, प्लीज स्टार्ट ग्रोइंग समथिंग यूजफुल इन योर हाउस. एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट. What I repeatedly say, it is your intention. You will love seeing the bees coming around. You would love seeing the butterflies. और bees की कहानी तो ऐसी है कि it is said that जब तक that last bee is living on the planet, human beings will survive. It's a beautiful feeling. So कहाँ जगह ढूंढनी है? Like for example, I have this is my house. I live in Noida. And if you can see, this arrow is my house. This arrow is not my house. Actually, my house is here, this green patch. And see all the roofs here. All the roofs are empty. It is my house. And my roof is absolutely, if you can see niche, lower picture here. And this is my house. And this is absolutely green. I take that pride. That is why I have come down to teaching people to how to grow your food. कोई भी जगह कहीं पे भी प्लास्टिक बॉटल्स, आपकी बोरियां जो आती हैं, खराब डब्बे, आप कहीं पे भी उगाओ. What will happen if you convert all these spaces to green? You know, एक green pasture अगर बन जाएगा तो क्या होगा? We all know our plants help us in building the carbon cycle. Biodiversity तो जो आएगी सो आएगी. Overall, it will build the carbon cycle. क्योंकि our whole life, everything, plants from to humans to many other, everything is dependent on the carbon element present in nature. I can sit outside in my house even in the months of May. Why? Because of so much of greenery. And this greenery, you know, blocks the noise which is outside on your streets. So why not? बहुत बड़े बड़े पेड़ जो भी उगा सकते हो आप उसको कोशिश करो. वाटर साइकिल में हेल्प करता है. We all know, I mean, I'm taking you back to 6th standard science book. We all read it. Evaporation होगा, condensation होगा, precipitation होगा, waterfall होगा. You know, this is the cycle. Aren't we killing this cycle? Who are we to do that? Nature doesn't give us this right. COVID is just the, कहते हैं ना, अपने दरवाजे पे एक knock है. Hello, please listen. And this change starts from you. Nobody else will come and do it. You and me have to start doing it right away. Because this is the place, our home is the start where your health and wellness begins. एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है. हमारी धरती माँ ने हमारा बहुत ध्यान रखा. अब हमारा फर्ज है कि हम उस धरती माँ को वो चीज दे जो उसको जरूरत है. वो फिर भी हमारा ध्यान रख रही है जितना वो मैक्सिमम कर सकती है. But where is our role? What is our role? So it's going to be really nice if we all sit back, see what are we doing with our lives? What are we doing to save our planet? Now, again, before I move a little bit more forward, I'm going to share a small video. This is by Shri Shri.
Shri, so I am teaching, I've been mentored under Dr. Prabhakar Rao, and I am being, so we are teaching natural farming all across. So these days we are doing it online, and this is the trust which is called Shri Institute of Agricultural Sciences and Technology. It's under Art of Living. So so Shri shared very important message, which is like for all of us to see how Earth as a living organism and what all can we do. So this is like a message from him. It's again available on YouTube, but still I would like to share it with you. This planet Earth is not mass of dead rock. She is living. It's an organism. The whole earth is a living organism. So we need to protect that like we protect our body. Let's not spoil this planet, this earth with chemicals and fertilizers which are harmful, which are toxic in nature. Let's preserve the planet in its pristine purity. We have to preserve Video cannot the be earth, seen. preserve the water Yeah, and the what? air. Sorry? Video I cannot see. I think everybody is able to see the video. Are you guys able to see the video? दिख रहा है मैडम, you please go ahead. Yeah, we can We have see. to We protect this can see. planet Please from continue. pollutions. It's only human race Yeah. which is polluting the earth. No animal ever pollutes this planet. We must learn from nature. We need to go back to organic farming and help in a sustainable I am growth of Himangini, but agriculture. I cannot see your Not video, just madam. the momentary growth with all these chemical and fertilizers, and then we make the soil unfit for cultivation. This we cannot afford to do anymore. So you just saw that. So Earth is also a living organism. We all must protect our Earth. And how? Home gardening. How? Natural farming. That is the only way we can do it. And believe me, it is sometimes I feel this change, like if we all start doing it right away, this will really bring, this can bring a lot of joy on our faces. I have these small little nieces of mine, they just come to my house and they just love to pluck, all the vegetables on their own. It's such a beautiful feeling. You see your plants growing inside your house. They are like babies to you. So I want this promise, since we are all here to, and all are here because of a cause. We all love plants. So let's all take a promise, give a promise to our own self that yes, from today, whether it's small, but I will plant something useful. I will plant at least my own palak, methi, sarson. That I will not buy from outside. Get into community farming. If you think you don't have spaces, get into community farming, or hold on a collar of one farmer. Uske kandhe pe हाथ रखो, उसके सर पे हाथ रखो, he will feel happy. हम लोग सिर्फ अपने उन फार्मर से हैकल करते हैं. So many suicide cases happen. Why? We need to stop that. My only last bit to today's webinar would be that please eat natural, grow seasonal, and be natural. Do not demand for a gobi in summers. बिल्कुल नहीं मांगो. वो गोभी को गर्मियों में बनाने के लिए उसको केमिकल ही लगाएगा या कहीं दूर से गोभी लेकर आएगा. तो गोभी को हम नहीं मांगो. घिया पहले दिन इतनी छोटी सी होती है, अगले दिन उसमें एक केमिकल डाल के उसको इतना बड़ा घिया करके आपको बेचते हैं. क्यों आज सारे खरबूजे हमें मीठे मिलते हैं? क्यों आज सारा तरबूज हमें मीठा मिलता है? पहले तो नहीं आता था. Let's think over it and let's see. And that is why home gardening
is an important aspect. And that is why growing food, your own food, becomes very, very important. Yes, thank you, Sachinji, and over to you. Thank you very much, madam, for your very inspiring and speech. And I don't have words. How can I explain you? It's a very beautiful presentation and very inspiring speech. So I think all will take the lesson from this today's speech, and everybody get involved in the plantation process, and whatever your suggestions, everybody is going to follow it. तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो एक इंस्पायरिंग सब स्पीच दिया है उसके लिए, और इससे मुझे बहुत खुशी होगी कि ये सब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है इसमें से कुछ सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और जो भी यूनिवर्स के लिए कुछ हमको करना है सब कर ही रहे, लेकिन दे गेट फ्रॉम द सोल, दे गेट इन्वॉल्व फ्रॉम द सोल, तो उस हिसाब से सब काम करेंगे इसे आशा रखते हुए थैंक यू वेरी मच अगेन once again. Now we have the next speaker with us. He's the innovator of green soil. He's a keen follower of organic farming and sustainable green environment. Member of INA. He's a member of Indian Green Building Council. He's also a member of International Society of Soilless Culture, Netherlands. He's a director and vice president of Haritson Group of Companies. He did everything is after BCom and LLB. He did his LLB from Kolkata and went to key centers for mines, University of New South Wales, Australia, to learn gemstone mining. So today we have with us Mr. Vinod Haritwal, Vice Chairman of Haritson Group. So I welcome on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request sir to give his presentation on the topic of healthy roots and healthy plants. So I request Vinod sir to start his presentation. Over to you, Vinod sir. Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद. नमस्कार. अभी छवि जी का लेक्चर सुन के बड़ा अच्छा लगा. मेरी डॉटर इन लॉ दीपिका हरित्वाल कुछ दिन पहले वो कल मुझे बता रही थी कि कुछ दिन पहले आपका ईओ एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लेक्चर था जिसमें आपने और कई चीजें बताई एंड शी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड. तो आई बिलीव शी इज आल्सो लुकिंग एट दिस वेबिनार राइट नाउ. बट थैंक यू वेरी मच छवि जी, आपने कई चीजें बताई. पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पानी नहीं रहेगा. मैं जयपुर से हूं पर पैदाइश कलकत्ते की है, बचपन में कलकत्ता ही रहा. वहां तो इतना पानी है कि फुटपाथ पे अगर गड्ढा खोदो तो 3 फुट 4 फुट में ही पानी निकल आता है. और आज यहाँ जयपुर में ऐसी हालत है कि हम 500 फीट नीचे चले जाएं बोरवेल, उसमें भी पानी नहीं आता है. और मैं हमेशा ही लोगों को कहता हूं कि 50 साल में जयपुर क्या राजस्थान पूरा ही बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रहेगा. अब पानी तो नहीं रहेगा लेकिन खेती तो करनी पड़ेगी, तो हम पानी कम यूज करें. मैं हमेशा जो भी गवर्नमेंट की या जो भी कोई भी फोरम होता है हमेशा ये कहता हूं कि आप ड्रिप इरिगेशन चालू करवाइए और इस तरह का कल्टीवेशन, इस तरह का एग्रीकल्चर, इस तरह की पौध यहाँ पर मत लगाइए जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत है. गेहूं राजस्थान में आ सकता है मध्य प्रदेश से और पंजाब से, तो यहाँ गेहूं उगाने की क्या जरूरत है. यहाँ फंवारे वाले जो है उनसे और इतना पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है. लेकिन पानी के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं. पहले 100 फीट पे था, फिर 200 फीट पे चला गया, 500 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे देखी जाएगी क्या है. हमें तो आज के लिए जीना है. तो एनीवे यही सब सोचते हुए मैंने बहुत साल अफ्रीका में भी बिताए हैं, साउदर्न अफ्रीका में. वहां हमने देखा कि पानी की कमी नहीं है, हरियाली बहुत है. तो राजस्थान में भी मैं बहुत सालों से हूं, यहाँ देखा कि पानी की कमी है, हरियाली बहुत कम है. तो कई चीजों में दिमाग आया. मैं इजराइल भी गया था शुरू में, करीब आज के 20 साल पहले. वहां भी देखा हमने उनके क्या सिस्टम है जो कि बहुत से कम पानी में और वो इतनी अच्छी खेतियां कर रहे हैं. फ्लोरिकल्चर में देवर नंबर 1, जबकि पानी की कमी है उनके. तो
इट गेव मी एन इम्पेटस टू थिंक कि क्या किया जाए जिससे कि पानी की बचत हो। चूंकि मैं माइनिंग से जुड़ा हुआ हूं, तरह तरह के मिनरल, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखे, साउदर्न अफ्रीका में भी देखे, तो फिर मैंने एक कोशिश करी है, डेवलप किया है। मैं कोई टेक्निकल नहीं हूं, मैं छवि जी आपकी तरह टेक्निकल नहीं हूं। आई एम बीकॉम LLB, जैसा कि इन्होंने बताया, और सारी जिंदगी बिजनेस किया है। पत्थर तोड़ा है हमने, तो चूंकि पत्थर तोड़ा है, पत्थर की खुदाई करी है, तो हमें ये पता है कि जमीन किस तरह की होती है। थोड़ा सा लेयर है जो कि आपके पौधों के लिए सही है, जो कि टॉप सॉयल कहलाता है। अब वो टॉप सॉयल खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस टॉप सॉयल से कहीं ईंटें बन रही है, ब्रिक्स बन रही है, कहीं उस टॉप सॉयल के ऊपर में कचरा गिर रहा है। तो वो सॉयल तो रह गई है, लेकिन इट हैज बिकम पॉइजनस। केमिकल्स आ गए उसमें, तो उसमें तरह तरह की गंदी बैक्टीरिया आ गई है। आज जो शहर का जहां कूड़ा घर होता है, डंपिंग यार्ड है, वहां पर सब्जियां वो पैदा करते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती है, तरह तरह के हेवी मेटल्स हमारे आते हैं शरीर में, जो कि बॉइलिंग करने से भी नहीं जाते हैं। सब्जी काट के सब्जी को धो लीजिए, बॉयल कर लीजिए, सब्जी बना लीजिए, लेकिन फिर भी हेवी मेटल्स विल नॉट गो। तो हमने कोशिश करी है कुछ ऐसी चीज डेवलप करें सो दैट पानी भी कम लगे और सब्जियां अच्छी हो, खाना अच्छा मिले अपने को। एंड इनफैक्ट कई सालों से मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइललेस कल्चर नीदरलैंड का मेंबर रहा हूं। अब तो इन दिनों में तो नहीं हूं, बट बहुत सी किताबें हैं जो कि मैंने पढ़ी है, उनमें बहुत से थोड़े बहुत अवार्ड भी मिले हैं, जगह जगह रिकग्निशन भी हुआ है। तो मैं इसके बारे में, जो हमारी ग्रीनोसिल है, जिसको मैंने कहा है एक ग्रीनोसिल ब्रांड है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सब लोगों को। लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटेशन प्लीज। Can you see the video? Can you see the presentation, please? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं सर। अब हो रहा है सर? हाँ, यस सर, इज इट ओके? इट इज ओके। फुल Okay, स्क्रीन कर sir. दीजिए खाली। Thank you. थैंक यू, प्लीज गो अहेड सर। So, greenhouse is pure and natural, lightweight, absorbent granules, innovative product for water and nutrient conservation in floriculture and horticulture। और यहाँ इंडिया में बनाया है हमने, तो प्राउडली मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, और आज हम जब सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली होम गार्डनिंग एंड ग्रीन डेकर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से काफी मायने रखता है। और मेरा मानना है कि लाइक वी ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एनी गुड थिंग और रूट कॉज ऑफ एनी बैड थिंग। तो उसी तरह से रूट कॉज अगर आप देखें तो प्लांट्स में हेल्दी रूट्स मीन हेल्दी प्लांट्स। ऊपर से प्लांट कितना ही सुंदर लगे, लेकिन अगर रूट कमजोर है तो वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखें कि रूट्स कितने डेवलप करती है। प्लांट ऊपर छोटा सा हो, लेकिन प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट चारों तरफ जाती है। फ्रॉम देयर दे सक। ऑफ कोर्स आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रूट कितने इंपॉर्टेंट है। बट चूंकि मैं थोड़ा बहुत बिल्डिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्रेडाई का भी मेंबर हूँ, तो बहुत से और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी बातचीत होती है। और तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं आपको कि आपने ताजमहल हमेशा देखा है। ये ताजमहल है जो कि यमुना के ऊपर खड़ा है। लिटरली नीचे पानी है यमुना नदी का, लेकिन वो आज इतने 100 सालों से क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उसके जो रूट्स है, इसका जो फाउंडेशन है, वो वाटर वेल के ऊपर में लगा हुआ है। पानी में है, लेकिन ये फाउंडेशन ऐसा है कि ऊपर कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो आप सब जानते हैं कि पानी से तो फाउंडेशन कट जाता है और कब की वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो फाउंडेशन मीन्स रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आज के दिन आपको इको फ्रेंडली होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा। आज के टाइम में हमें इम्यूनिटी डिजीज से मिलनी बहुत जरूरी है।
उसके लिए जैसे छवि जी ने भी कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ग्रो नेचुरल, ईट नेचुरल, बी नेचुरल एंड बी हेल्दी। आज के दिन अच्छी सॉइल नहीं मिल रही है बिकॉज इट इज कंटामिनेटेड विद केमिकल्स। सब जगह सॉइल है लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया। गुड क्वालिटी इनपुट नहीं मिलते हैं, केवल हार्मफुल केमिकल्स मिल रहे हैं किसानों को। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनकी ग्रोथ पूरी अच्छी से नहीं होती है, प्रोडक्शन पूरा जोर को नहीं होता है, इरिगेशन के लिए पानी की कमी है, और भी बहुत सी टिपिकल प्रॉब्लम है। मैं एक चीज बताऊं, मैं थोड़े दिन पहले और एक ग्रीन हाउस में गया था, काफी बड़ा ग्रीन हाउस, करीब 3-4 करोड़ रुपए लगा के उस किसान ने, और उसमें खीरे पैदा कर रहे थे। आजकल आपने देखा होगा खीरे आते हैं जैसे मशीन में बने हुए हों, बिल्कुल दे आर ऑल क्लोन्ड यू कैन से। तो उस किसान के खीरे बड़े अच्छे थे, मैंने कहा कि क्या इसको खा सकते हैं, देखें कैसा स्वाद है। तो उसने यहाँ की मारवाड़ी में कहा, नहीं नहीं ये अपना खाने का नहीं है, ये अपने खाने का नहीं है, इसमें तो जहर भरा हुआ है। अब जो किसान है वो खुद बोल रहा है कि मेरे खीरों में जहर भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप नेचुरल तरीके से क्यों नहीं करते? वैसे आप नेचुरल तरीके से करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन इतना कम होगा, हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि अगर हम 20 रुपए किलो में खीरा बेच रहे हैं, उसकी जगह हमें 200 रुपए किलो में बेचना पड़ेगा। कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ध्यान देते हैं लोग। अब जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में कहीं भी आप देख लीजिए कि पानी ज्यादा क्यों लगता है, पानी भी लगाते हैं और वो न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो जाती है, या टॉप सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, रूट्स में एरेशन नहीं मिलता है। टॉप सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई तो उसके ऊपर फ्लडिंग हो गई, एक्सेस मॉइस्चर हो गया तो पेस्ट अटैक हो गया। सॉइल है आइदर एसिडिक है और एल्कली है, इस तरह की समस्याएं हैं। तो जो ग्रेनोसिल हमने बनाया है, जो कोशिश करी है हमने, इट अब्सॉर्ब्स एंड गिव्स स्लो रिलीज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, देयर इज लेस फ्लडिंग ऑफ द टॉप स्ट्रेटा, सॉइल में पोरोसिटी बनी रहती है, रूट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं आगे दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल आपको। नेचुरल पीएच है इसका, न्यूट्रल है, तो एसिडिटी और एल्कलिनिटी नहीं होती है इसमें, और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। आप इसको 2 साल 5 साल भी अगर अपने पौधों में रखें, इट विल नॉट डिसॉल्व, डज नॉट क्रम्बल इजीली। बहुत से पॉटिंग के प्रोडक्ट है जिनको आप अंगुली से भी दबाएंगे तो, और या कई बार तो है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, या कुछ रॉट हो जाते हैं जो प्लांट वेस्ट मटेरियल है, या उसमें पेस्ट अटैक हो जाता है। हमारे इस मटेरियल में नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। एंड व्हाट इज ग्रेनोसिल? ग्रेनोसिल आप ये देखें, दिस इज व्हाइट कलर, इट इज एन अब्सॉर्बेंट सिलिका जिसका हमने नेचुरल शेप के ग्रेन्यूल बनाए हैं। एंड it is very effective for rooftop gardens because it is much lighter than weight than soil, and it has better water and nutrient management. तो जो better nutrient and water management है और lighter weight है, तो रूफटॉप गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग के लिए तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज नहीं मिल सकती। अब वेजिटेबल फार्मिंग, ये मेरी फैक्ट्री का प्लॉट है, उसमें हमने सबसे शुरू में दिखाया, शुरू में कोशिश करी थी। दिस इज माय ग्रेनोसिल एंड दिस इज द सिटी कंपोस्ट। मैं कंपोस्टिंग भी करता हूं अपने लिए। दिस इज द सिटी कंपोस्ट, द ब्लैकिश थिंग, एंड दिस इज ग्रेनोसिल। उसको लेके फिर हमने बनाया, तो इतनी अच्छी शिमला मिर्च आई कि वो स्वाद शिमला मिर्च का हमने कभी नहीं खाया, और दोस्तों को जिनको भी दिया दे वर वेरी हैप्पी। नाउ वी कम टू कि प्लांट्स में कैसे हो सकता है। On the right hand side, this is a soft drink bottle which has been cut. इसमें आप देख रहे हैं गोभी उगी हुई है, कॉलीफ्लावर, यहाँ आप देख रहे हैं टमाटर उगा हुआ है, और इसकी जड़ जो है, of course the screen is small so you cannot see, but around 9 to 10 inches जो रूट्स हैं पूरी फैल गई हैं हमारे इस ग्रीनोसिल मटेरियल में। इसमें हमने डाला सिटी कंपोस्ट, some micronutrients organic, and our material grenosil जो granules हैं वो।
and you can see the growth, how much is the growth. फिर same चीज हमने convert करी pots में. Now you can see the pot. You can see tomato. आप धनिया देख सकते हैं, पालक देख सकते हैं, and look at this cauliflower. अगर आपके पास 20 गमले हैं तो धीरे धीरे आप 20 कॉलीफ्लावर उग जाएंगे. आपके पास 50 है तो 50 उग जाएंगे. It depends on how much space you have. अब लोग कहते हैं कि भाई प्यूमिस स्टोन भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आवर मटेरियल इज बेटर बिकॉज इसके अंदर में माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो कि कनेक्टेड टू ईच अदर है. पानी अब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करके फिर धीरे धीरे रिलीज करेगा. पर प्यूमिस स्टोन में बबल टाइप के वॉइड होते हैं जो कि मोस्टली अनकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये पानी करीब 40% अब्जॉर्ब करता है, वेयर एज आवर मटेरियल 70 to 80% अब्जॉर्ब करता है. Now we compare it with coco peat. Coco peat is a very, very common thing. Actually, in fact, it is not a peat. Peat is a semi-fossilized coal, charcoal, और जो कि mostly यूरोप में ही है, which is called peat moss. इंडिया में जो है वो practically, actually it is coco pith. उसी को general use में coco peat बोलते हैं, but it is susceptible to diseases. It crumbles easily. It rots after some time, and it is suitable only for limited time. Whereas, जैसा कि मैंने बताया, granules, these granules, they are there forever. So, similarly, perlite is very light, of course, but then it crumbles very easily, and then it loses effectiveness after some time. Again, it is suitable only for limited time. Now, हमने जगह-जगह ग्रीनोसिल के और डेमो दिए हैं. We have got very good response from all over India of many expos. Of course, इस साल तो एक्सपो सारे बंद हो गए हैं, but many expos we have given our live demo. You can see these bottles, and everybody has been mesmerized by the root development which they have seen in these bottles. Even grass, जबकि grass की root तो ज़्यादा नहीं जाती है, even grass बहुत अच्छी है इसमें. और वेजिटेबल्स तो आप ये देखिए, हमारे फार्म, मेरा एक छोटा सा फार्म है, उस पे मैं लगाता हूँ. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दिस इज माय बॉल, दिस इज माय पेन. तो यू कैन सी द हाइट ऑफ द प्लांट. करीब 12 इंच का प्लांट होगा ये. उसके अंदर करीब 3-4 इंच की कैप्सिकम आ गई है, बिकॉज द रूट ग्रोथ इज देयर. प्लांट बड़ा हुआ या नहीं हुआ, पर रूट बड़ी हो गई उसकी. एंड यू सी द कैप्सिकम, lal mirch, and broccoli. You can see the broccoli from here to here. It is about 8 inches, 8-inch diameter की broccoli बनी है. And you can see green peas. क्योंकि रूट का डेवलपमेंट हो रहा है. रूट का डेवलपमेंट होगा, फाउंडेशन, जैसे बच्चों का फाउंडेशन अच्छा होगा तो आगे जाके डेवलप करेंगे. सिमिलरली अगर रूट का डेवलपमेंट होगा तो आगे जाके अच्छा करेंगे. कैसे यूज करते हैं एक छोटा सा वीडियो भी मैं दिखाऊंगा. बट किसी पे प्लांट पे जो ये रूट एरिया है, रूट जोन, वहां पर अपने को मिक्स करना है. थोड़ा नीचे भी रखना है, थोड़ा ऊपर भी रखना है, और एक लेयर जो है वो ग्रीनोसिल का कंपोस्ट के साथ में मिला के रखना है. एंड ग्रास, ये मेरे फार्म हाउस का लैंड है, ये उसका लॉन है. यहाँ पर आपको पता है राजस्थान में केवल बालू है, इट्स सैंड, जहाँ कुछ भी नहीं ग्रो करती है. तो इसमें हमने प्लेन सैंड में सबसे पहले हमारे ग्रेनुसिल के ग्रेनुल की जो कोर्स पाउडर है वो बिछा दिया. यू कैन सी द वाइट. फिर उसके ऊपर में और सिटी कंपोस्ट जो हमने बनाई है और थोड़ी सी बालू, ये मिला के हमने लेयर बना दिया है. नाउ यू कैन सी विद इन 3 months राजस्थान में इस तरह का लॉन बन गया हमारा. एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ग्रास है, और ग्रास की जो रूट्स हैं वो कम से कम 8-9 इंच नीचे जा रही है, कम से कम 8-9 इंच नीचे जा रही है, which is normally not very very possible. ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ ये हमारी ग्रीनोसिल की टीम है. We are all working 24 hours. ये फ्लावर्स में भी काम आ सकती है,
or very good for vertical gardens because it is lightweight, it increases soil porosity, पानी बहुत कम चाहिए इसमें, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी होती है, सोयल में कॉम्पैक्टनेस नहीं होती है, because green wall, vertical garden, green wall is very difficult to maintain. आप 20 फीट ऊपर चढ़ के 10 फीट ऊपर चढ़ के उसको कोडिंग नहीं कर सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते, and it is very good for all types of lawns and golf green, etc. Very good for ornamental plants, succulents, and very good for bonsai. Bonsai में तो ऐसा है कि जापानीज एकेडमा आती है जो ग्रेनुअल आते हैं, करीब 3,000 रुपए किलो होते हैं. It totally replaces those Japanese academia if you are using it. और भी जो भी एरिया है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग, उसमें भी आप ऐड करें इसको. फ्लोरिकल्चर है, किचन गार्डन है, टेरेस गार्डन, सीडलिंग ट्रे, डेकोरेटिव ट्रे गार्डन, लैंडस्केपिंग, वेरी 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 एनीवेयर एनीवेयर. हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अभी छवि जी ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट वेरी वेरी एक्सेप्टेबल. आई टोटली एग्री, बट हाइड्रोपोनिक्स में भी आपको सोइललेस मीडिया अगर चाहिए तो यू कैन यूज इट वेरी वेल. और फिर ये आपके प्लांट को कूल रखते हैं. अगर ऊपर आपने प्लांट के ऊपर लेयर लगा दिया है इसको आसपास में, तो ये हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को आपके जड़ तक नहीं जाने देता है, और वो जो गर्मी होती है वो जो पानी को मॉइस्चर बना के, पानी की स्टीम बना के ऊपर निकाल देता है, वो बच जाता है आपका पानी. तो पानी की कम जरूरत पड़ती है इससे. अब कई चीजें हैं जो कि मैं डेवलप कर रहा हूं. कई तरह की साइज है इसकी. 0.5 mm से नीचे कोर्स पाउडर है, 2 mm, 2 to 4 mm, अलग अलग साइजेज है डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. यू कैन यूज दीज ग्रेन्यूल्स. अब ये सारी चीजें जगह जगह देखी हमने, जगह जगह समझी है. सारे सर्टिफिकेट्स हमने लिए हुए हैं फॉर नंबर ऑफ इयर्स. Quality management, environmental management, occupational health and safety, everything is there. And we are always available to you at these numbers. Of course, ये शेयर कर देंगे हम आप सभी से. And एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा. 그런 거 더 베진 더 베진 이게 필요 시대 또 게 마샬 이제 Can we start the video? 와 너보다 My sister is so beautiful. See. How to use? ये देखिए very simple है. अना उदय मने सर वीडियो रन नहीं हो रहा है आपका. हाँ, वीडियो रन नहीं हो रहा है. वीडियो रन नहीं हो रहा है. मैं फिर कोशिश करता हूँ सर. ये हमारे पीपीटी साहब है, ये थोड़ा निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. मैं इनको निकालता हूँ जरा. हाँ जी सर. कहाँ से जाएगा ये? Can you see it now? Yeah, you can start now. Done. ठीक है. This is a city compost which we are using, which we are making the compost.
Yes, sir. Thank you very much, sir, for your very informative session. Thank you very much once again. आज मुझे सही में लग रहा है कि आज छवि मैडम ने जो बताया उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट बताया एज ए मीडिया, इट्स वेरी वंडरफुल। अरे मीडिया को पॉट में डालने के लिए हमारे साथ गार्डनिया से जिग्नेश भाई जुड़े हुए हैं। तो once again I will thanks to Grinosil, Gardenica and Rudhira Enterprises for sponsoring this webinar. Thank you all. और अभी जो मीडिया यूज करना है, तो हमको अच्छे पॉट चाहिए, होम गार्डनिंग करना है तो अच्छे पॉट चाहिए, टेरेस गार्डनिंग करना है तो अच्छे पॉट जुड़े। तो हमारे साथ जिग्नेश भाई जुड़े हुए गार्डनिका से। तो आई रिक्वेस्ट जिग्नेश भाई टू शेयर हिज वीडियो और प्रेजेंटेशन। सो ओवर टू यू। आ जाओ यहाँ, बैठ जाओ, खड़े क्यों? मंजीत जी वीडियो रन नहीं हो रहा है। बैठ जाओ, खाना खा लिया, बैठ जाओ। कल कितने बजे आ जाओगे? कल वीडियो रन नहीं हो रहा है, प्लीज चेक इट आउट। क्योंकि मैं उस हिसाब से जो है वो करूंगा ना थोड़ा। संडे मार्केट खुलती है यहाँ पे, सोले वाली? अभी तो मिल गया। I request all the participants to be on mute. I request all the participants to be on mute. डालोगे यहाँ पे मीटिंग एंट्री का डालो इफेक्ट, आप जैसे प्रॉफिट का डालना तो वहाँ डालो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो माइक्रोफोन से खाली म्यूट पे रखिए प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। उधर डालो, इन्वेस्टमेंट में डालोगे ना, फिर डेवलप ऐसे डालो। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्रोफोन म्यूट पे रखिए प्लीज। इसमें से क्लास करना होगा ना, ऐड करना होगा। ये सब वो है ना माइनस का, ये तो प्लस करोगे आप, तो वो अपने आप प्लस वो होगा। कैसी बात कर रहे हो? Sir, hello, Sachin sir, can you hear me? I can hear you. Sir, I just would like to ask a question, like what is the actual schedule duration of this webinar, sir? I'm sorry because I have no idea up to what time it's going to be. It will be up to 4:30. Up to 4:30. Okay. Thank you, sir. Thank you for your response. Thank you. I think video is not connected to now. Hello. So I think Lalit, you can hear me? Lalit ji, you can hear me? Yes, sir, I can hear you. Yes, I can hear you. Okay. So I think video is not running. So still we are not will not waste the time. So now we are with Methi Lalit. Is an Indian-born Canadian with rich and diversified decade-long working and living experience in Canada. He is an automotive journeyman technician and has worked with world's top automotive brand, General Motors. Currently, he leads research and design team from front, developing simple, smart, sensible gardening solutions through harmonized combination of multiple skills of critical thinking, problem identifying, designing, and hands-on tools knowledge. कुछ आप लाते He कुछ चीजें strongly नहीं believes that
Designing is an art of running constraints into convenience, and design is a response to social change. जो So बिजनेस we have a great speaker today from Alpha Planters, Nitin Lalit. So Nitin ji is involved in different kind of innovations, and we have the opportunity to share his knowledge and ideas from him. So now I request Lalit from Alpha Planters to give his presentation. So I request that सब वहाँ पे आएंगे Nitin ना ji तो to give his presentation. Over to you, Nitin ji. वाली थैंक यू सचिन जी। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बीच में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, प्रदीप कुमार जी का वो ऑन है माइक्रोफोन, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। कैन यू जस्ट रिक्वेस्ट हिम वंस I am frequently requesting all the participants to keep the microphone on mute. ओके, आई जो भी थिंक participants के microphone on है अपने उसको mute कर लीजिए please. ऑलराइट ऑलराइट So over to you, Nitin ji. ऑलराइट सर, ऑलराइट। Sir, is my presentation visible? Yeah. All right. So my name is Nitin Lalit, and I am a design enthusiast and a certified journeyman technician by profession. And what I think is that design is, design is something which we can convert our constraint into convenience, and design should be always for a social change. So now Alpha Planters is हम इसमें क्या करते हैं कि we make planters, we make special engineered planters so that you can grow what you eat, as simple as that. So I am one of the founder with my father here, Mr. J.K. Lalit, and we are a Indian startup company set in 2017, and our area of intervention is horticulture, growing system, and urban gardening. But before going on to a further presentation, I would like to here mention what Ms. Chhavi did mention, that resistance towards growing food, what is our intention, and edible is not downloadable, and a lot of stuff. So in my presentation, what I feel myself very much responsible for the community, that if I have learned a lot of design skills and I know how to make things, I should be doing something better to give back to community. And Alpha Planters is one of the solutions towards the community. So now I will start that is my profile, as Mr. Sachin already have told you about. So I'll keep moving forward. This is me in Canada. I have a 5-acre plot, and I do my own gardening, and I'm eating my own food since 2008. So I have my rotavators, my John Deere, my grass mowers and everything, and this is what I own, and I do garden a lot in Canada. But when I was doing gardening in Canada, I stumbled upon so many problems, because being a design enthusiast, my always mind keeps ticking. So these are the problems what I saw, that our Indian community, especially, it is across the world, but especially in our Indian community, where we have a great population outburst already, these are the problems. What is that is 50% what waste traditional gardening. Just to give you an example, a regular planter needs 200 to 300 watering cycles in a year. And normally when we water our planters, we always water at least 2 to 3 liters at each time. So coming up to somewhere around 1,600 to 1,000 liters water a year per planter, which is a big loss. And most of that water is leached down or goes to drain, with only minimum water which is absorbed by the plant. Second is toxic food, that industrialization of food, as we all are talking about already. Now, other are environmental challenges, such as all these chemical fertilizers are required for gardening techniques and all. Now, space constraints was another major problem which we found during our research, that people are living on high rises now. They are going from one story to another, then another, and they're going, space is high. So space availability is also a problem, and one is lack of knowledge. That is a very big factor, which is coming as a gap between the end user, a grower, and how to grow.
And one factor which is not mentioned in this here is renters. There's a lot of renters also, they want to do gardening, but because they only have a lease for 11 months, they are not able to set up their gardens also. So that is one also a deterrent effect on our community. So now these are the existing alternatives, what we have just talked about: traditional pots, traditional method, and now the new kid on the block, that is hydroponics and aeroponics. यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इस ट्रेडिशनल पॉट की. हमने अभी लास्ट वीडियो में ये देखा कि जब वो ग्रीन सिल को जब प्लांटर में डाल रहे थे, ये ऐसा ही प्लांटर है जो आज से बहुत सारी सदियों पहले मोहनजोदारो हड़प्पा एक्सकेवेशन साइट में निकला था. आज तक हमारा प्लांटर चेंज नहीं हुआ है. हम सब कुछ बदलने की बातें कर रहे हैं, बट हम आज तक अपना प्लांटर नहीं बदला. पर अगर आप ध्यान से देखें, हमारे नाम पास फोन की जगह हमारे पास स्मार्टफोन है. आईफोन भी नहीं, अब स्मार्टफोन है. शूज में पहले होते थे जूते, आज हम रनिंग शूज अलग हैं, बास्केटबॉल शूज अलग हैं, पार्टी वियर्स अलग हैं. आपका मनी डिजिटल मनी हो चुका है, कार्ड भी नहीं, अब तो डिजिटल मनी हो चुका है. हर चीज इवॉल्व कर रही है, बट हमारा गमला इवॉल्व नहीं किया इतने सालों में. तो ये मुझे एक बहुत फैक्टर मेरे दिमाग में हिट हुआ कि हम सब कुछ करते जा रहे हैं, पर हमने जो चीज बदलनी चाहिए, जो रूट जोन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो नहीं बदल रहे हैं. सो नाउ उसके बाद हमने अपनी टारगेट मार्केट भी सोची कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी. तो जिसके अंदर हमने देखा प्रोग्रेसिव फार्मर्स, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, नर्सरीज, इंस्टीट्यूशंस, गार्डनर्स. नाउ अब हमने उसके बाद जब सोचा कि अच्छा हमने इनके लिए बनाना है, तो व्हाट शुड बी एन आइडियल सॉल्यूशन. An ideal solution should be lightweight and portable. It should be affordable. It should be less or least or at no maintenance. It should promote plant growth. It should be environmental friendly. It should be long lasting, and over all the top, it should be definitely water saving. That was the ये हमारा ideal solution जो हमने इसको किया. So upon research, upon a lot of research, I have used a lot. I went through a lot, many countries in the world. I went through all Europe by car with my wife just to see what is going on in the market. So then we came up with these are alpha pots. These are made from recycled plastic. These are self-watering, lightweight, long-lasting, and modular. They can be opened. It has a cavitated wall design and have enhanced root physiology, and also the vapor lock. This is like, this vapor lock is enhanced water saving, which I will show you in next slide, that what we are talking about. And this product is fully tested and ready to ship already. So now, if you just 1 second, sir. It is just, oh, I'll have to share it again. ready பண்ணிடுவோம். So just 1 second. Yes. Sorry about that. Screen. सर क्या मेरा वीडियो नजर आ रहा है सर? हाँ Sorry about that. It's fine. So this is what we have done. If you see the picture in the right in the middle, आप देखेंगे ब्लैक पॉट के साथ हमने एक व्हाइट रखा है. ये जितना भी इवेपोरेटिव लॉस है, ये वाटर डोम्स जो बने हैं, इसके कारण हम अपनी जो साइकिल्स को एटलीस्ट 2 to 3 days ऑन टॉप ऑफ नॉट एडिंग वाटर हम और डेफर करते हैं, जिससे हमारी एक्टिवली वाटर सेविंग होती है. द पिक्चर व्हाट यू सी ऑन द लेफ्ट साइड, जिसके अंदर रूट फॉर्मेशन है, ये वाली, दिस इज ये हमारा जो रूट फॉर्मेशन जो है, ये ड्यू टू दीज कैविटेटेड वॉल डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स अपना बैठ के आराम से दे आर एबल टू रिटेन दैट मॉइस्चर ड्यूरिंग द कंडेंसेशन एट द एंड ऑफ द डे. और ये राइट साइड में मेरी पिक्चर है, हमने इसके अंदर काफी टेस्टिंग की है. दिस इज अनदर वेयर यू कैन सी क्लियरली कि इसके नीचे अब एक हमने वाटर रेजर्वोयर भी लगाया है,
जिसके कारण क्या होता है, जो आपके लीचिंग लॉसेस होते हैं, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था कि हमने सब कुछ बदल दिया पर अपना गमला नहीं बदला, तो हमने वही बदलने का काम किया है। आप फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, उसके अंदर पूरी एक इवेपोरेशन लॉस जो होता है उसको रिटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स हैं वो हमारे चारों तरफ पेरिफेरी में है और सस्पेंडेड इन एयर है इन कैविटीज के अंदर। और जो आप थर्ड पिक्चर देखेंगे, ये जो हमारा वाटर जो नीचे लीच डाउन होके जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो कलेक्ट हुआ है, वो ये रूट्स अपनी कैपिलरी एक्शन से इसको इजीली पिक कर रही हैं। सो फास्टर ग्रोथ है इसके लिए, और अब हमारा जो वाटर सेविंग है वो एनॉर्मस है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमने इसके अंदर जब हमने टेस्टिंग की तो हमने इसके अंदर वी आर ओनली डूइंग 52 to 60 वाटरिंग ईयर इन 600 to 1000 watering, we are doing almost 60 years 60 waterings a year in this planter, and we are able to grow our plants flawlessly. Now ये हमारा एक सोल्यूशन है जो नॉर्मल आप अपने घर में गमले लेते हैं उनके लिए सोल्यूशन है हमारा। ये एक टेस्ट ट्रायल किया गया था, डॉक्टर गुरबचन सिंह जो फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और चेयरमैन ऑफ ASR भी रह चुके हैं, ये उनका ट्रायल है। उनको हमने ये पॉट्स दिए तो उन्होंने ट्रायल किया। ये सेम टाइम पे दोनों है, लेफ्ट एंड राइट आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ये उन्हीं की ही फाउंडेशन की पिक्चर है, ये उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। नाउ दिस इज अवर अनदर आंसर फॉर अल्फा आइट्रेंज, योर गार्डन ऑन व्हील्स। आई स्टैंड फॉर इन्फानाइट, आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट फॉर दिस, and in this trench this is actually a raised क्यारी। हमारे घर में क्यारियां होती हैं, पर आजकल घर 7वीं मंजिल पे भी हैं, ये मतलब 500 मीटर ऊपर भी जाके भी हैं। तो उसके अंदर आप गार्डनिंग कैसे करें, अपनी स्पेस तो है आपके पास, एक बार आपके कंस्ट्रेंट को हम उसको कन्वीनियंस हमने इस प्लांटर से बनाया है। ये 100% रिसाइकलेबल मटेरियल से बना है, लाइट वेट है, सुटेबल फॉर इंटेंसिव गार्डनिंग है, अभी हम आपको दिखाएंगे उसको। और 100 क्यूबिक लीटर इसका वॉल्यूम है, सेल्फ वाटरिंग एंड वाटर कंजर्विंग है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है सप्लीमेंटल रिटेंशन सिस्टम है। ये न्यूट्रिएंट एयर वाटर को रूट के सबसे बॉटमस्ट जोन में ऑल द टाइम अवेलेबल रखता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो फुली डेवलप्ड, टेस्टेड, रेडी टू शिप एंड पेटेंट। सो नाउ हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे इसके बारे में। ये हमारा एक प्लांटर है, ये कम्स इन अ बॉक्स, ये छोटे से बॉक्स में आता है इस तरीके से। हम इसको वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं और बिना किसी टूल्स के हम इसको पूरा असेंबल करेंगे आपके सामने राइट हियर। ये एक मेम्ब्रेन है, लाइनर है, जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन और इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, विकिंग इफेक्ट देता है और कैपिलरी एक्शन को एनहांस करता है। टोटली पोर्टेबल है और नॉट इवन ऑन स्मूथ सरफेस, ग्रास में हम चला रहे हैं इसको। है अंदर वेरियस हमने वेजिटेबल लगाई हैं, डेंस प्लांटेशन है, आप देखेंगे टोटली डेंस प्लांटेशन है। यू कैन नॉट सी एनी ग्रास और सॉइल अंडर। और जीरो वीडिंग रिक्वायर्ड थी हमें, हमने इसमें कोई वीडिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ बीज डाले और जस्ट ऐड वाटर लाइक मैगी, सिंपल। सो नाउ ये हमारा एक जो प्लांटर है। सो नाउ ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बेंगलोर, इंदौर से हमें हमारे कस्टमर्स ने भेजी हैं, जो ये ऑलरेडी इन्होंने लगाए हैं। अराउंड पीपल आर ऑर्डरिंग अराउंड 4 to 10 ट्रेंचेस उनके घरों में लगी हैं। सो लेफ्ट साइड यू सी कि ये आफ्टर कोरोना का जो लॉकडाउन खुला था तब हमने ये डिलीवर की थी। एंड मिस विद्या शिंत्रे is growing a lot of good food, what you see right here. So this is another picture
और ये राइट साइड में हमारे अपने हम जो यहाँ पे अपनी टेस्टिंग की है उसकी पिक्चर है राइट हियर। और ये हमारे ऑल्टरनेटिव्स अभी जो मार्केट में चल रहे हैं। जो राइट वाला है ये इंपोर्ट होता है, वुड का बना है, इट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग। जो लेफ्ट वाले हैं ये हमने नॉर्मली घरों में देखे हैं, बट दे आर नॉट दैट साइंटिफिकली एडवांस्ड कि जो आपको ईज ऑफ गार्डनिंग दे सकें, राइट। सो नाउ दिस, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स हमारे अब लाइफ में गार्डनिंग में अब आ चुका है। तो हमने इसको अपने अल्फा प्लांटर्स को बनाने के लिए हमने एक और सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप स्पेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद अवर अल्फा वर्टी ग्रो सिस्टम। नॉर्मली हाइड्रोपोनिक का सिस्टम आजकल लोग ये लगा रहे हैं घर पे, जो मेरे हिसाब से, मुझे नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट ये स्पेस बहुत ले रहा है। इसके अंदर जो जितना हम ग्रो कर सकते हैं इतनी स्पेस में वो बहुत कम है, एंड बहुत एक्सपेंसिव मिलता है मार्केट में। सो दिस इज आवर अल्फा वर्टी ग्रो सिस्टम एंड ग्रो व्हाट यू ईट। अगर आप इसमें देखेंगे नीचे अल्फा ट्रेंच है और साइड में ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मॉड्यूल्स, ये इसी के ये लगे हैं। जो आपके ये जो राइट साइड में आप ये देख रहे हैं, राइट, ये वाला सिस्टम मॉड्यूल हम इसके अंदर यहाँ पे लोड करेंगे, जिसके आप अपनी जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं वो आप बीच में लगा सकती हैं। जिस तरीके से आपका टोमेटो हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, बहुत सारी सब्जी हैं जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में नहीं लग पाती हैं, तो वो आप इसके बीच में यहाँ ग्रो कर सकते हैं। और जितने भी हो गया, बेसिल हो गया, धनिया, पालक, मेथी, पुदीना, वो आप यहाँ पे वर्टिकली ग्रो कर सकती हैं। आप इसको जब मर्जी डिटैच करके हार्वेस्ट करके वापस इसको हैंग कर सकती हैं। जिस तरह आप एक घड़ी उतारती हैं, सेल डालते हैं और वापस उसको आप कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। इसको मैं आपको क्लोजली दिखाता हूं। दिस इज ग्रो मोर इन लेस स्पेस। दिस इज अल्फा वर्टी ग्रो सिस्टम एंड इट कैन आल्सो बी कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम टॉप। सो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन है फॉर द पीपल हु वांट टू ग्रो ऑन देयर टेरेस बालकनीज एंड दे हैव लेस स्पेस. They can use this system and it is completely modular and portable. It comes in a box, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। अब आप इसके नीचे देखेंगे, this also consists with a water tank right here. That is a tank which retains water and is able to supply water and everything whenever it is required on demand of the plant need. अब इस चीज को देखा और देखी, बहुत लोगों को डोम टाइप कुछ मंकी की प्रॉब्लम आती है, पेस्ट की प्रॉब्लम आती है, हमारे को बर्ड्स की प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमने एक और प्लांटर हमने डेवलप किया है, जिसको हम बहुत जल्दी हम आपको इसको एक ऑफिशियल इसका लॉन्च करेंगे। दिस इज वर्चुअल रिमोट असिस्ट पोर्टेबल ग्रीन हाउस और सोलेरियम। मैं कनाडा में रहता हूँ, वहां पे ग्रोइंग सीजन होता है, वहां पे इसकी बहुत डिमांड रहती है, वहां पे बहुत लोग ग्रो करते हैं। तो दिस इज अवर वर्चुअल असिस्ट पोर्टेबल ग्रीन हाउस। ये वर्चुअल भी हो सकता है, अगर आपको वर्चुअल नहीं चाहिए आप इन मॉड्यूल्स को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ एज अ केज यूज कर सकते हैं। ये टोटली ओपनेबल केज है, आप जो सी मर्जी ग्रोइंग अपना प्लांटर आप कहीं से भी इसको चारों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इसको और एक्सटेंड करना है, आप ऑन डिमांड कर सकते हैं, बिना किसी टूल्स के, बिना किसी वेल्डिंग के, बोल्टिंग के, आप इसको इजीली इसको कर सकते हैं। सो दिस इज अवर वर्चुअल रिमोट असिस्ट पोर्टेबल ग्रीन हाउस। तो जिनकी भी प्रॉब्लम्स, अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं कि जी उन्होंने सिर्फ गमले में उगाना है, उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। कोई कहते हैं जी हमें अपनी छत पे लगाना है, हमें वाटर सीपेज ना हो जाए, उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। कुछ कहते हैं जी हमने पोर्टेबल, हमने वर्टिकल भी उगाना है, हॉरिजॉन्टल भी उगाना है, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। और बहुत सौ के पास प्रॉब्लम ये है कि मंकीज हैं, पेस्ट है, सनलाइट है, विंड है, रेन है। तो ये हमारा पोर्टेबल ग्रीन हाउस है और हर एक तरह के कंज्यूमर के लिए हमारे पास ये डिफरेंट मॉड्यूल हैं। इन all the product come out ready to fit without any tools. It comes in a box from Karnal, not from Kashmir to Kanyakumari, from Karnal to Kansas, Karnal to Kentucky. We do it worldwide. So now, what are our competitive advantages? It is modular and lightweight. It is self-watering and water conserving, and also delayed watering cycles. You know, shortcut with long steps. हम shortcut तो लगा रहे हैं, उसमें long step भी ले रहे हैं, उनको delay करके. Grow more in less space because it is high density plantation. Best root physiology and air pruning. No need for special skills or tools. आपको इसमें गुड़ाई नहीं करनी है और minimum इसके अंदर maintenance required है. आप you can become a garden pro just by काटो, खोलो और लगा लो. No hoeing and weeding required. And can grow all kind of plants and vegetables
in it, and it is a pesticide-free produce and also a protected greenhouse. So these are the one of the salient feature and competitive advantages over all the other planters till now, which we have been seeing. And to just add on top, we stand by our planter, and these our planters come with a lifetime warranty. If it breaks, we will replace it for you. So now why we did that? Because market opportunity. I could sense the market opportunity from very hello. Anji. Hello, am I audible? Please continue your presentation, Okay, sir. sorry, call आ गया था Chatterjee साहब का. So increasing importance of kitchen gardening globally, indoor plants to combat indoor pollution, no alternative than traditional plants, also growing less space and less water. Here I will read again, growing more in less space and less water. So here I would like to talk something to Ms. Chhavi, that ma'am, this is what we have come up with. I'm a design enthusiast and I'm an engineer by profession. My simple resume is I know how to park a car from point A to point B, one by driving it and one by opening it part by part. So what I use all my skills towards making these planters so that I could help my community here, which is in a dire need of all that. And I would relate it to you about that letter of 2070, which you started with your presenting with. So now we are team advisors. This is my father, Mr. J.K. Lalit. He's an agriculturist and a retired bank official. I am founder of Alpha Planters also and a journeyman technician. And our advisor is Dr. Gurbachan Singh, former chairman of ASRB, of ICAR and assessment. He did a lot of things in his life, and it was lucky to have him on our board. These are a few of the pictures what we have done. Now, this is a recommendation letter. You can see all the known faces in our INA. It's right there. And I really thank you very much all for all that. And we also have been nominated for a National Water Award for water conserving. Now, here I would like to emphasize on that we all are talking about water saving, but one thing we should do all together or take an initiative. Today, we have a star rating in AC. We have a 3-star, 4-star, 5-star appliance where they save energy. Why not to have a water rating system for the planters which are more efficient? If electricity which we can produce from the sun, why are we not doing it for the water which we cannot produce from sun? So this is my humble request to all my friends here who are listening to this, to do something about the water rating system for the planters. So, and now this is our MOU between Alpha and GS Fred, Gurbachan Singh Foundation for Research, Education and Development. And on the left side, you see inauguration of Alpha planters by Dr. S.K. Malhotra. Now, this is one of the certificate of excellence which we were awarded at HortiPro. Now, this is Mr. Sachin. You can see yourself right there. So, right. So you remember this picture, right? So that was a really great time. And this is one of the acknowledgement by Dr. Alka, a renowned personality among us. And this is moments of pride for us. We have been visited and done a lot of great things in this time. These are our happy customers. This is their gardening experience. So this is Mrs. Vidya Shintrin, and she is growing her vegetables everywhere right now. This is Mr. Ishmana, New Delhi. He lives in Green Park, and he's having a great time with all of our planters, and he's growing what he's eating. And this is Dr. Brahmanand Mohanty right there. He's already growing. And this is Avinash Iyer, a young guy who has understood the value of growing food by themselves, and he is in Chennai, and this is what you see. And he has already, this is what he said, that he has no hesitation in using me as a slot. So this is what was an endeavor. What we are doing is we are also encouraging here, and this is my niece. Hello? थोड़ा fast click कर लीजिए.
So this is my niece. She's 6 years old. She's growing what she's eating already, and no, and also her friends. So now this is what we have done till now. And if you allow me, I have a live. I can show you a live demo also where we are sitting right now here, because this is what we are. We have a consumer experience center where people can where people visit for all these things we are doing, and we can also give you a live tour. So now this is what we have done. Uh, just one second. Okay, just one second. Sachin, I'm not able to open Lalit ji, you this. have 2 minutes now left for your presentation. No problem. I can post a video later on. Or you can see, but it's basically the same thing. So just one second, sir. I'm not able to open this window again. Okay. All right, sir. So yeah, that is alpha planters, and this is what we have done. So if there are any questions I can take, or if anybody wants to contact us, you know where to find us. We will take the questions in the last session after the all speakers speech. So thank you very much, Nitin ji, for presenting your product in this webinar. Now I request Alankira ji, please share the video of Gardenica. I am thankful to our sponsors, Green Soil, Gardenica, and Rudhira Enterprises for sponsoring this webinar. Thanks to all the sponsors. मैडम वीडियो नई वीडियो नहीं आ रहा है मंजित जी नहीं है क्या वहां पे बागुल का sorry, due to some technical problem we are not able to share the video of Gardenica. Before that I will introduce our next speaker, Mr. Bagul. Mr. Vyankatesh Bagul is a mechanical engineer. उनके बारे में बोलना है तो इज अ वेरी यंग चैम्प, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो. He has a firm of Rudhira Enterprises. After completion of his mechanical engineering, he did a job in Mercedes, and after that, because of the passion for the nature, for the environment, he started or entered in the field of nutrients, and he started his own products under the banner of Rudhira Enterprises. So I request Vyankatesh Bagul to give his presentation on nutrient management for home garden and kitchen garden. So I welcome on behalf of INA, and I request Vyankatesh Bagul to give his presentation. So over to you, Vyankatesh. Thank you so much, sir. Hello. Hello, everyone. My name is Vyankatesh Vijay Bagul, and basically, thank you so much, sir, for introducing myself. And again, I'm thankful for to Miss Chhavi ma'am, who shared everything about how we have to do our garden, kitchen garden, and we can grow our own vegetables and everything at our place. And again, I'm also thankful to Mr. Vinod Haritwal sir for
explaining everything about soil and roots, like essential, why it is very essential for plants. Even Mr. Nitin sir, we've been together in HortiPro. They have designed very good products for plants to grow. A very technical product they have. So overall, we have everything. So now we want is what nutrients we should provide to our plants to grow, and we can have all type of nutrients for ourselves as well. So basically, I'll just start. So like I can see everybody over here who have been participants, everybody are like technical people who knows what all we need. Basically, we need boron. What deficiency we can go have in our plants. So to fill all that deficiency, we are having a product named Orgo. This one for our garden plants and even for our vegetables and everything. Simply after our okay, with whatever the products we are producing, it is from our waste management side. Like whatever we are doing, vision of Rudhira Enterprises is waste management. So whatever the produce we are doing is taking whatever the material is taken out from this thing, coal, a lignite coal. The whatever the raw material is taken from the mineries, it is taken out and it is processed into a different categories. A good coal is used for power generation, where and whatever the waste, it used to be thrown into seas, ocean, and even and it used to pollute marine environment. So our Indian scientists, they have designed this technology, and we have been taken over it, and we are providing through this our brand. And the basic three objectives we have of our organic plant boosters, that is that first is it's good for white root development. Whatever the plants have, it develops. Then other than second thing is it is used for nutrient uptake. The whatever the nutrients, it acts like a catalyst. It helps for nutrient uptake. And the third thing is it is used for good for vegetative growth, new like flowering and every like green color and everything it comes. Basically, I have been working on this just because after like I have seen we have done a lot of like we have created human has created a lot of problems in our earth, and we should take that responsibility to work on it and to like we have so much of upcoming issues like Goa and RA. There are a lot of trees are been cut down. Even from my childhood, I'm trying to like I'm observing the many plans for making of national highways and everything. Many plants are being cut, trees, old species trees been cut. So like we are on planting more and more Indian species into our soil, and again create that same atmosphere as it was before. Then just go through this. This is our website. You can go through our website, what products we are providing. Different type of things. Overview. What is Orgo actually? Basically, it is a nutrient for every plants you have at your place, indoor plants, outdoor plants. If you use it properly, we have this best product which we provide. This is organic plant booster for ready spray. We have now, as we can see, there are people who need everything instant and ready. So we are providing them this 500 ml bottle as well as 1000 ml. So what can they do is they can regularly spray it on the soil once a week, like Sunday to Sunday. They can use it properly, and they can get very good results of our product, and it is totally organic, so they will have a very good produce in their place, and they can also
eat a very healthy food. There are different products. These are the concentrated bottles. These are the ready ones. I'll just show you one more thing. So, like, I'll tell you the benefits of a product. Like, it is 100% organic, and it is a byproduct of lignite coal, as we are doing waste management as well. So, it like increases, improves soil structure, even balances soil ecosystem, and even it doesn't leave any artificial compounds. Its application protect it protects all types of plants. Even you can use it for your farms, gardens. It is also used for agriculture base as well. Our customers who are daily using their photos. Even there was done kitchen garden at our like. We have also our products available on Amazon and Flipkart. So like you can see, there are, if you can just search Orgo Organic Plant Booster 1000 ml, or I will tell Chatterjee sir to share the link of our website as well as the link of our products, so that you can order from here and you can use it for your plants. This is our Instagram page where we share all this. It is also available in all the nurseries in Nasik, Pune. If you have any technical issues, you can contact me directly on my phone number. Thank you, sir. Thank you for sharing your value. Thank you very much. Now I request to Alakara to run the video of Gardenica. Venkatesh, please exit from your screen. Venkatesh, please exit from your screen. Manjuji, are you sharing the video? Manjuji. Yeah, Sachinji, Janice bhai, the Gardencia people is going to present from their own, from their end. They will share the videos. Janice, Janice. Jinesh bhai, please share your video. So I'm thankful to our sponsors once again, Dunosil, Gardenica, and Rudhira Enterprises for sponsoring this webinar. इनके वजह से वेबिनार्स हो रहे हैं, उस सभी स्पॉन्सर्स को तहे दिल से इंडियन नर्सरी की ओर से शुक्रिया। आज हमने बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा की। छेवी जी ने हमको बहुत इंस्पायर किया। आज हरिद्वाल साहब ने प्रोडक्ट मीडिया पे फोकस करके बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। ललित साहब ने उनके प्लांटर्स के बारे में बहुत अच्छा जानकारी देके एक इनोवेशन बताया है। यस सर, जिनेश भाई आ रहा है सर स्क्रीन पे? नो सर, गार्डनिंग का टेक आ रहा है सर, वीडियो नहीं शेयर हो रहा है।
शेयर नहीं हो पा रहा है सर वीडियो। सॉरी सर। हाँ सर। अब हेलो, कैन यू लिसन सर? हेलो। हाँ बोलिए सर, शेयर नहीं हो रहा वीडियो आपका। हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरा प्रोडक्ट इधर से। हाँ जी प्लीज प्लीज। नो ग्रीन टेक गार्डनिंग का क्या हमारे तो जिग्नेश भाई है, सो ही विल शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट जिग्नेश भाई टू एक्सप्लेन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। ओवर टू यू सर। Hello sir, I am from Gardentia Technology. We are manufacturing plastic flower pots and self-watering pots, and we are manufacturing like this self-watering pots in different shapes and different size and different colors, suitable for your home and gardening. I want to share my video, but it is not. I cannot share it because of some technical problem. I can share my catalog and my website in the group. You can check it from there, and you can contact me for the purchase flower pots. Thank you. आपका चैट में वेबसाइट और ईमेल आईडी डाल दीजिए सर। सर मैं डाल दूंगा। तो बहुत बेटर रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई नो योर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एंड very beautiful products you have. So thank you very much. Now I request all the participants, those who have any questions regard to our speakers, all the speakers are with us now. So जिनका भी कोई question है related to today's topic, they are free to ask. This platform is open for now discussion. So I request our participants, they have any question, please free to ask. I request all the participants, those who have any question to our speakers. Our speakers are with us now, all are available. So if they have any question, please free to ask. Sir, my question. Please go ahead, ma'am. Sir, kindly share the price of the planters, the alpha planters. Yeah, sure, ma'am. I will send the link also, everything, and with all the whole information about that. And what we have also done, that also I will show you. But if you just want to, if I would like to show you here. मैडम आपका ईमेल आईडी उसमें डाल दीजिए, ललित साहब आपको कैटलॉग शेयर कर देंगे वो ईमेल आईडी पे। ललित सर आप उनकी ईमेल आईडी पे कैटलॉग शेयर कर देना। Yes, sure, I will do that. अब अगर आप ये देखेंगे मैम, ये हमारा अल्फा प्लांटर है यार, राइट यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। पापा इन्होंने जरा चुपना। अब ये देखिए, now he is my father right here. This is all our testing what we have done. हमने अपने घर पे भी सब कुछ उगा रखा है। और ये देखिए मेरे फादर हैं, ये पूरा का पूरा आपको बेड, ये देखिए। Now if you see, ये देखिए रूट सिस्टम, और नीचे ये मेम्ब्रेन है। यहाँ पे if it will rain, water यहाँ पे रहेगा, and also absorbent material भी रह सकता है। और ये इसका रूट सिस्टम है, fibrous root system right here, all around the bed. और ये हमारी प्रोड्यूस है right here. ये टोटली पोर्टेबल है। नाउ दिस इज रेडी फॉर द, ये हमारे लोकल कस्टमर हैं जिनके लिए रेडी हुआ है फॉर देयर, उनके घर के लिए। लोग इसको ऑर्नामेंटल के लिए भी यूज कर रहे हैं। एंड इफ यू सी राइट हियर, ये आज से हमने 2016 में हमने ये बनाई थी। ये हमने सबसे पहले हमने लोहे की बनाई थी, अब जो बनाते हैं स्टील की बनाते हैं। सो नाउ दिस इज अवर मेथी, दिस इज अवर धनिया। नाउ हियर वी हैव अवर पालक ग्रोइंग. And this is all done by my niece. My niece comes and does all this, ma'am. So, and see, this is the whole the salad trench. And now this is our lasan. We are growing it right here, and germination is going very fast. This is our onion. Thank you so much. So is there any question, any more question from the participants? Yeah, contacts please. Hello. Am I right? Hello. हाँ जी बोलिए सर।
Could we have the email IDs or contacts of all the speakers, please? So I request all the speakers put their email ID in the chat, so it will be easier for all the participants to contact you. So I request Chhavi madam to Vinod sir, Rudhira Enterprises के Venkatesh साहब and Lalit साहब, please share your email ID in the chat. It will be We'll do that. convenient. So it will be convenient to our audience to contact you. Sachin sir, good evening. Good evening, madam. I would like to poke a question to Lalit sir. Ms. Lalit, are you there? Yeah, Lalit is there. Sir, may I know what's the media you're using in your planters, like to their growth? The soil, what is the ratio of mixtures you're using in the soil? Ma'am, we have used complete soil also. We have used 100% coco peat also. We have tried a city compost also. So this is our consumer experience center. We have researched and everything. But what we have found out that our all the plants have done very well across it because of the aeration and the water retention and much needed nutrient retention at the bottom, right? And also the membrane what we use also scatters the water evenly and it is able to facilitate the capillary action. So media we have used all kind of medias, ma'am. Okay. My question to Mr. Vinod Haritwal ji. Yes, please. जी सर आपने जो ग्रीन सॉइल का बताए ये आपकी ये अल्फा प्लांटर्स और ये ग्रीन सॉइल का कॉम्बिनेशन का कितना पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है, मतलब कितना चेंज ला सकता है टेरेस गार्डनिंग में? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकता है बिकॉज दिस प्लांटर्स आर वेरी गुड व्हाट आई सी एंड ललित जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें और सर आपका वीडियो रुक गया। मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसमें मैडम प्रोडक्ट इज वेरी गुड, ग्रीनोसील इज वेरी गुड प्रोडक्ट एंड उनका जो अल्फा का प्लांटर्स इट इज आल्सो वेरी गुड, सो यू कैन गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। शायद हमारे साथ विनोद सर का संपर्क टूट गया है बिकॉज ऑफ आई थिंक ही हैज लॉस्ट द कनेक्शन। सो एनी मोर क्वेश्चन? That's all, sir. That's my question to you, and thanks for your answer. Thank you. Okay, there is one question from Rajkumar. Do you use only water or also another liquid nutrients for required supplements needed to the plant growth? I think this question is can be answered by Nitin. Yes, sir. Yes, sir. I will answer. So yeah, I have now we only use. I'm standing in my garden. We have, I don't know any name of any solution, sir. I'm a gardener with the two left hands. What we have done is we added vermicompost. We added simply locally available kitchen waste compost from here, and tender love and care, and just add water. Nothing what we have done special. We have not done anything special at all. I have a question for Nitin? Please, sir. Sir, this membrane that you're using in the pots. Yes, sir. Can we do without the reinforcement, without the steel? I'm looking at furrows in a longer, say, in a furrows made out of mud. Yes, sir. In mud, and your membrane put into that. Can it work? We are already testing it out, sir. Okay. We are already testing it out. There is not a problem with that. Okay. So. But this is the product which I have for means where the furrows are not there. That's where we can. This is the whole structure. अभी लोग घर में stand बनाते हैं उसके ऊपर गमला रखते हैं. हमने गमला और stand एक ही में कर दिया है. ऐसा what I'm trying to say is this will not be for a terrace garden. This will be for a small nursery like thing. So no, ma'am. Okay, the furrows one. The furrows. Yeah, the furrows. Okay. अगर आप furrows का देखें, if you allow me to start my video, sir. I am standing right here at my nursery right now. I will show you something great. Sachin? If I can start my video. Can you just show us that video? Nitin ji, in short, please show the video. Yes. Sir, दिखाने ही चीज जो देख के समझ आता है ना, कई बार बोल के समझ नहीं आता. हाँ जी, please go ahead.
Okay. So now, sir, this is our nursery. This is not a nursery. हम plants बेचते नहीं है, ये हमारा research है. हम अपने घर से plant लेके आए थे और हमने उनको इतना propagate कर लिया है यहाँ पे, right here. अब ये हमारा एक normal, आप एक ये देख लीजिए, हमारा एलोवेरा plant लगा हुआ है. अब ये मेरे सबसे छोटे planter में लगा हुआ है. ये रहा, right here. पापा पढ़ना. ये छोटे से planter में लगा हुआ है. ये 3 इंच का planter है, सर, 3 इंच का, right? इसके नीचे तो मैंने water reservoir भी नहीं लगाया, and we are growing our all the plants like crazy. मेरे पास बहुत हर चीज में ग्रोथ हो रही है. आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, अगर मैं इसको भी खोलूं तो इसके अंदर आपको जड़ें ये देखिए, ये देखिए, look at that. So तो हम इसके अंदर अगर आप फरोज की जगह ये प्लांटर्स भी यूज करना चाहें तो it can be a great option, sir. Yes, sir. Thank you. That's answered my question. Thank you. Thank you, Lalitji. There is one question from Sundarnan Thakur. Are there any indoor plants available in Delhi which needed minimum air and no sunlight? If so, which are those indoor plants and where I got this? Madam, इसमें आप Aralias, Diphyllobiaceae, Aglaonimas की varieties use कर सकते हैं. There are so many varieties in these plants, so you can go for the Aglaonimas, Diphyllobiaceae, Aralias. These are the very good plants for indoors. Even some cordyline. So you can use any in every nursery in around Delhi you will get these plants. So I think these are very good plants for your indoors. There are some varieties of philodendron also you can try. Sunandan Thakur, madam. So there is any question from the question participant? for Mr. Lalit. Yes, yeah, sir. Please. What is the per square meter cost for your item? Sir, I don't sell in a per square meter. I sell thing in a box and straight to the all the products are already ready. I don't sell it in parts, sir. But the small thing which you have shown it in the nursery. Yeah. The video which you have shown just now in the nursery. Yes. That is in the small size. Yes, sir. That's the smallest we make for ourselves. We have done our testing of different sizes. I do it in all kind of different sizes so that I can come up with a clear number कि मेरी कितने से प्लांट में कितना हो जाएगा. तो हमारे प्लांट छोटा प्लांटर भी बड़े से भी ज्यादा हमें वो कर रहा है. तो अगर नर्सरी लेवल पे अगर किसी को करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रोपोगेशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है. ओके सर. और जो आपको जो प्लांटर आपको जो दिखाया मैंने वो 4 साल पुराना प्लांटर है वो. अच्छा. हाँ जी. Thank you, Lalitji. We have to wrap up the session over here for today's topic. So आज का जो टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग होम गार्डनिंग, तो होम गार्डनिंग में हमने बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखना रहता है कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे एरिया कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस कितना है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह से है, सॉइल मीडिया कैसा है, और हमको क्या चाहिए गार्डन. सचिन जी, शायद गार्डनिका की स्क्रीन शेयर हो गई अभी. हाँ जी, गार्डनिका is sharing the screen. Please go with me. You can see, sir. Thank you, Gardenica. Thank you for sharing your video. Very beautiful and very beautiful pots. So यहाँ पे हम जो होम गार्डनिंग के बारे में आज जो डिस्कशन हुआ, पैनल ने बहुत अच्छे तरह से सब डिस्कस किया. चीजें उनको ख्याल में रखनी है रिगार्डिंग क्लाइमेट, रिगार्डिंग स्पेस, regarding media, regarding water management, regarding nutrient management, that we will share in the next session also. जो भी कुछ अभी लग रहा है कि ये कुछ छूट गया है क्योंकि we have time frame. So आज के जो हमारे speakers थे, विनोद सर,
ग्रीनोसिल से, उन्होंने जो आज मीडिया पे उनका जो काम चल रहा है उसके बारे में जो जानकारी दी, बहुत ही अहम जानकारी थी। ये इनोवेशन से नई टेक्नोलॉजी हम सबके लिए जरूरी है, इंडियन नर्सरीमैन के लिए जरूरी है। तो थैंक्स टू विनोद सर फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस। छवि मैडम ने का तो बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्पीच था, और मुझे आनंद होगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को आज इसमें से इंस्पिरेशन मिलके वो इसमें जरूर इन्वॉल्व होंगे और नेचर के लिए और काम हम अपना बढ़ाएंगे। तो थैंक्स टू छवि मैडम। ललित जी ने का काम तो बहुत ही पैशनेट है, उनके स्पीच से, उनके प्रेजेंटेशन से ध्यान में आ रहा था कि इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। तो थैंक्स टू नितिन ललित साहब। वेंकटेश बाबुल जो हमारा एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन छोड़ के इस टीम में आए जहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसा यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ रहा है, तो मुझे बड़ा आनंद होगा कि इस देश का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा कि वेंकटेश जैसे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो थैंक्स टू मिस्टर वेंकटेश बागुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिंगी भाई फ्रॉम गार्डनिका, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट किया है। उनके जो अच्छे प्रोडक्ट है वो सब नर्सरी मैन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और उनको और अच्छे बेंचमार्क यहाँ से मिल सकता है। तो थैंक्स टू आवर टुडे स्पॉन्सर आल्सो, ग्रीनोसील, गार्डनिका एंड रुधिरा एंटरप्राइजेस। और सबसे बढ़िया जो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग दिस वेबिनार्स एंड मेकिंग इट टू सक्सेस। इसके साथ साथ हमारे इंडियन नर्सरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वाईपी सिंह साहब, उनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है। इस जो वेबिनार चल रहे हैं उसका सब जो उपयोग ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसका नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, उसका सब श्रेय हमारे इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के वाईपी सिंह साहब को जाता है। तो थैंक्स टू वाईपी सिंह साहब। उसके साथ साथ हमारे आईएनए के जो सेक्रेटरी त्यागी साहब, उनका भी बहुत अहम रोल है इस वेबिनार में। तो थैंक्स टू और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड होल आईएनए टीम। उसके साथ साथ दीपक चटर्जी जो साहब हमारे जो जुड़े रहते हैं सब स्पीकर्स को लाने के लिए बहुत भगामक करके मेहनत लेते हैं। तो दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज हम वेबिनार से सबको कनेक्ट कर रहे हैं, तो विशाल जी महाजन, विशाल जी, मंजित जी, विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस and see you in the next webinar. Thanks to all. Thank you very much. Is it possible to get the recording of this full program, some link? Sure. We will share. I will share the link with you. Okay, thank you. Sir, good evening, sir. Sir, how to get membership in INA, sir? So we have the registration facility. You please share your email ID on chat. So we will send you the link for registration. Sure. You put your email ID in the chat with request for INA registration. So accordingly, we will send you the link. Yeah, Manjit sure. ji, is it okay? Sachin ji. Yeah, ji. Sachin ji, like, thank you for the session, like the complete package of gardening thing you have planned for. It started with the soil, the planter, and then the nutrition management, like the liquid they were using, and at last the planters. Thanks you INA for organizing this webinar and giving us an opportunity to join to share such important information and knowledge. Thank you. Thanks to you, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you.